Good afternoon, friends. So, we are at the judiciary's last leg. One or two pages are there, right? After that, just judiciary, I will try with you. Give me a few seconds time. Yeah, I will try with you. That is executive. Then I will go for executive. From judiciary, I will go for executive. From executive, I will do to legislature. So judiciary आज खत्म हो जाएगा, right? So judiciary basically today the topic is judiciary and the parliament. अब ये दो मेन इंडियन डेमोक्रेसी के दो स्तंभ हैं, judiciary and parliament. And they used to sometimes they used to fight on the about the ego also. Judiciary said, I'm powerful, and parliament said, I'm powerful. You decide who is powerful, right? Even it is said, judiciary, even parliament sometimes without the majority of 2/3 majority, parliament cannot interfere into the judiciary mechanism. Okay, that is a separate issue. Now, apart from taking a very active stand on the matter of rights, the court has been active in seeking to prevent subversion of the constitution through political practice. Politics, judiciary बहुत active है, और जुडिशरी ये चाहती है, एंड ये जुडिशरी wants that, and it is successful, that parliament should not intervene into the judiciary matter frequently. पार्लियामेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकते जुडिशरी के मैटर के ऊपर, right? Constitution through political practice. Areas that were considered beyond the scope of judicial review, such as powers of the president and governor, were brought under the purview of the courts. पहले क्या था? आप गवर्नर के पावर को चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को प्रेसिडेंट के पावर को चैलेंज नहीं कर सकते हो. सॉरी, नाउ यू कैन, दे आर आल्सो अंडर द लॉ. कहा यह जाता है कि लॉ इज अबव ऑल. कानून सब सर्वोपरि है, कानून सबसे ऊपर है. ओके, सो कानून सबसे ऊपर कैसे होगा? व्हेन अदर पीपल विल बी बिलो द लॉ. लॉ के नीचे होंगे, लॉ सबसे ऊपर होगा. So maybe president, maybe prime minister, maybe anyone, they are under the law. There are many, here it is, there are many other instances in which the Supreme Court actively involved itself in the administration of judiciary by giving directions to executive agencies. There are many other instances, बहुत से instances हुए हैं in which Supreme Court actively involved, Supreme Court active involved रही है itself in the administration of justice. Justice के administration of justice, न्याय के प्रक्रिया के अंदर Supreme Court involved रही है by giving direction to executive agencies. Who are the executive? I told you earlier also, there are two types of executive generally: permanent executive and non-permanent executive. Here, non-permanent executive in democracy, they are more powerful, all type of ministers. And jitne bhi ministers, and then they are all non-permanent executive. Why non-permanent? Because after 5 years, they have to go for election again. We don't know they will come back again on the same position or not. So they are non-permanent. But they have chosen by the people in democracy, by the people, for the people, of the people. That is the best method in democracy. So लोग जो है खुद चुनते हैं उन लोगों को. So those people who are ministers, they are very powerful. But non-permanent executive, like deputy commissioners, other officers, they are non-permanent, the permanent executive. So direction to the executive agencies. Thus, it gave direction to CBI, initiate investigation against politicians and bureaucrats in the Hawala case I told you earlier also. The Indian constitution is based on delicate principle of limited separation of powers and checks and balances
चेक्स और बैलेंस करती है, ये आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। चेक और बैलेंस करती है, मैंने बेसिकली इट्स अ डॉग वॉच, वॉच डॉग है हमारा, जो जुडिशरी है ना, वॉच डॉग है, देखती है और उसके ऊपर अपना काम करती है। दस द पार्लियामेंट इज सुप्रीम इन मेकिंग लॉज, पार्लियामेंट इज सुप्रीम मेकिंग लॉ, पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है, और कानून को कौन देखता है? So that it should be implemented as the toto implemented by the parliament. But it said that judiciary is to behave like a watchdog. So thus the parliament is supreme in making laws and amending the constitution. The executive is supreme in implementing them. Executive जो होगा, अब पार्लियामेंट ने तो लॉ बना दिया, parliament law, अब उसको देखेगा कौन कि this law has been implemented or not. So in this way judiciary is supreme. In one point, making of law is parliament is supreme, and implementing of law is judiciary is supreme. Then both are the supreme. That is why they used to fight sometimes, that who is senior one, right? Implementing them, while the judiciary is supreme in setting disputes, deciding whether the laws and have been made are in accordance with the provision of the constitution. मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वैसे ही कानून बना है या नहीं बना है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको चेक बैलेंस करना, चेक करना, these are all done by the judiciary. Only law is made by their legislature or parliament. पार्लियामेंट लॉ को पास करती है, लेकिन सबसे बड़ा काम होता है जुडिशियल लॉ को देखती है कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. Right, constitution. Despite such clear-cut division of power, the conflict between parliament, judiciary, and executive, and the judiciary has remained a recurrent theme in Indian politics. ये देखो लिखा हुआ है, देखो. Despite, here in your screen also is there. Despite such clear-cut division के बावजूद, clear-cut division के बावजूद, कि जुडिशरी को कहा, जुडिशरी के अपने काम है, जुडिशरी का अपना दायरा है, पार्लियामेंट का अपना दायरा है. पार्लियामेंट किसी कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करती है, पार्लियामेंट किसी कानून को बनाती है. 2/3 majority, राज्यसभा as well as लोकसभा, when pass it, president pass it, then that become कानून. अब जुडिशरी देखती है कि उस कानून को जो पास हो गया, मे बी it is for the good or maybe for not good. That is if somebody goes in the court, that is then it will say about it that कानून ठीक है या नहीं है. जब तक सपोज कोई जाता नहीं है, then the judiciary used to say that the कानून is been implemented, कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है. लेकिन इतने शॉर्टकट डिवीजन के बावजूद भी, clear cut division, after the clear cut division, judiciary, I told you earlier also, judiciary and parliament, they used to fight with each other that who is supreme, who is in the position of supremacy, कौन आगे है, right? So that is answer. Parliament, judiciary, that is remained a recurrent theme for fighting, for not fight type of fighting, arguments we can say, that theme in politics. We have already mentioned the differences that emerge between parliament and judiciary. Differences emerge होते हैं parliament और judiciary के अंदर over the right to property and parliament's power to amend the constitution. अब पार्लियामेंट क्या करता है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, अमेंड का मतलब काट छाट. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज 1950 our constitution was implemented, 1950s. अब 2023 चल चुका है, 22 or 23, whatever is, right? So इतने सालों के बावजूद some laws are not acceptable, right?
laws are not acceptable because that time that law was acceptable, अब एक्सपायरी डेट में चली गई। सीधी सादी भाषा है कि कुछ कानून जो है एक्सपायर हो चुके हैं, उनको उनकी कोई वजूद नहीं है, राइट। तो अब तब हम क्या करते हैं कि बेसिकली कानून को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं। अब बिल पास हो गया, कानून बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की का हक किसे है? हु हैज द गॉट द authority to amend the law? That is judiciary. So parliament and judiciary over the right to property, and the parliament's power to amend the constitution. Parliament के पास पावर है constitution को amend किया जा सके। अब amend किया जाए या ना जाए, तो sometimes somebody goes to the judiciary, then judiciary will say that what to do and what not to do. Let us recapitulate that briefly. Immediately after the implementation of constitution began a controversy arose the parliament power to restrict right to the property. अब आपको पता है ना कि right to property was first of all fundamental right. Now it's not a fundamental right. So to restrict right to the property, the parliament wanted to put some restriction on the right to hold property so that the land reforms could be implemented. The court held the parliament cannot thus restrict fundamental rights. अब कोर्ट ने क्या कहा कि आप फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते हो। द पार्लियामेंट देन ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट ने कहा जब आप तो कोर्ट ने क्या कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कीजिए, आप डायरेक्ट किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हो। Through the law, through the proper channel, you can do it. How the proper channel? What is the proper channel? The proper channel is the parliament has the power to amend the constitution. Parliament has power to amend the constitution. Without amending the constitution, then judiciary says you cannot interfere with the fundamental right of the human being, which is said that to property is a fundamental right at that time, quite time back. Right. So that was a fundamental right. Now you say it is not a fundamental right. How can you say that? You have to amend the constitution. Then what they did, they amend the constitution. Let us now, what is it? The parliament wanted to put some restriction on the right to hold the property so that the land reforms could be implemented. Land reforms, आपको पता है ना, land reforms bill pass हुआ है. It is effectively, implemented in West Bengal. That's a, Green Revolution was basically the best part was Punjab, Haryana, and Western UP. So same land reform was the best part implemented in West Bengal. So land reforms could be implemented. The court held that the parliament cannot thus restrict the fundamental rights. The parliament then tried to amend the constitution, but the court said that even though the amendment of fundamental right cannot be abridged. कोर्ट ने कहा कि आप कर दो, उसके बाद भी हम देखेंगे कि आप इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फंडामेंटल राइट से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ओके। The following issues were at the center of the controversy between the parliament and the judiciary. अब क्या points हैं जो basically judiciary और parliament के अंदर चलते हैं? क्या क्या points हैं? Let's discuss that. Main points क्या है? judiciary और parliament के अंदर एक टकरार का मुद्दा बनी हुई है। One, what is the scope of right to private property? प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का स्कोप ऑफ राइट क्या है? राइट, नंबर वन, व्हाट इज द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट पावर टू कर्टेल? अब पार्लियामेंट उसको कैसे कर्टेल कर? जब आपके पास फंडामेंटल राइट हो गया, तब वो उसके पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि आपके पावर को अमेंड करे? ओके। सेकंड, एब्रिज और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट। ये आपका फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, पहले था, अब उसको अमेंड कर दिया गया। Then there was a law you can right to property is your right, but it's not a fundamental right. Third, what is the scope of the parliament power to amend the constitution? पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का क्या स्कोप है, क्या जरिया है, किस तरीके से पार्लियामेंट जो है आपके कर सकती है?
Second, last one, can the parliament make laws that abridge fundamental rights while enforcing directive principles? Okay, there are two things, na? One is directive principles. Let me recapitulate with the principles also, क्योंकि आप उसको भी भूल गए हो गए लगता है मुझे. देखिए, directive principle means and its aim is to create social and economic condition. Is to create directive principle का main aim क्या है? To create condition of economic and social economic condition under which the citizen can lead a good life. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस लिए होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपके साथ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाए, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट किया जाए जहां पे आप योर लाइफ शुड बी एट ईज. लाइफ को आप आसानी से आप बिता सके, जिसके अंदर ऐसे कंडीशन हो जिसके अंदर आप अच्छी जिंदगी बिता सके. फॉर एग्जाम्पल, गुड होम शुड बी देयर, good communication system should be there, good education system should be there, good employment should be there, good salary should be there, so that you can lead a dignified life. आपकी जिंदगी अच्छे तरीके से चल सके. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो. इट इज सेड दैट यू शुड हैव गुड हॉस्पिटल्स. तो उस गवर्नमेंट के पास, उस स्टेट गवर्नमेंट के पास they have such of money that they can spend on the hospitals. But you can challenge if your fundamental right is not being accepted. आप fundamental right को accept नहीं किया गया है, that you can challenge in the court. आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो. लेकिन आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो. आपका ये ऐसा ही गवर्नमेंट को करना चाहिए. अब नहीं कर पा रही है, and the funds are not there, many other foundations are there that it's not able to do it, then you cannot challenge it into the court. Right. So directive principle means that an aim is to create social and economic condition under which the citizen can lead a good life. Right, that is the directive principle. Can the parliament make laws that abridge fundamental rights while enforcing directive principles? क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सामने मद्देनजर रखते हुए क्या पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकती है? मतलब योर फंडामेंटल राइट इज फॉरमोस्ट. योर फंडामेंटल राइट इज फॉरमोस्ट. क्या एक आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट किया जाए? कैन इट बी पॉसिबल? नो, आई डोंट थिंक सो. Here another one. During the period of 1967, ये बॉक्स आप पढ़ लीजिएगा. Right, that is Alladi Krishnaswamy Iyer. During the period of 1967 and 1973, this controversy became very serious. Apart from land reform laws, laws enforcing preventive detention, laws governing reservation in jobs, regulation acquiring private property for public purposes, and laws deciding the compensation for such acquisition of private property were some instances of the conflict between the legislatures and the judiciary. Interesting है कि वो क्या point थे? It could be a question. Which are those points on which judiciary and parliament came face to face? एक दूसरे के सामने आके खड़े हो गए कि what should be done and what should not be done. Number one, कब से हुआ ये?
1967 से लेकर 1973 तक। कंट्रोवर्सी क्या थी? बहुत सीरियस हो गई थी। वो कंट्रोवर्सी किस पॉइंट पे थी? लैंड रिफॉर्म लॉज के ऊपर। लैंड रिफॉर्म लॉज के ऊपर। अब एक बंदे के पास 100 एकड़ की जमीन है, एक के पास 2 एकड़ की जमीन है। Now, the 100-acre zameen is also belonging to him, a person's property, and 2 acres zameen also a person's property. How can you seize that particular point? In suppose someone is having excess of land, you can land reform. आप उसको seize कर लेते हो. Somebody says that it's not the basic need. ये ऐसा होना नहीं चाहिए. It should not be done by the government. Right. So, apart from land reform laws, laws enforcing preventive detention होता है। किसी को आप बिना बताए उसको उठा, पुलिस जो है बिना बताए उसको पिकअप कर लेती है, because they used to think that this man is not fit for to live in society. A person who is dangerous for the society, he should be under the preventive detention. What do you mean by preventive detention? Preventive, किसी को रोके रखना, किसी काम के अगेंस्ट। डिटेंशन, रोक के रखना। कहां पर? जेल में या हवाला। तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है दोस्त। You pick up in certain circumstances. Right. So the police picker used to pick up in circumstances, special circumstances. Right. So property and laws deciding the laws governing enforcing preventive detention. Number one, laws enforcing preventive detention. Number one. Number two, laws in governing reservation in jobs. You have gone through मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बारे में पता है ना आपको? ओबीसी को इन्होंने 27% रिजर्वेशन दे दिया था बीपी मंडल के गवर्नमेंट ने। राइट। तो द पीपल, some people are frustrated, some people are happy. Right. That is how to govern the reservation in jobs. Is it justified? Some people say it's justified. Some people say no, there should be no reservation. Regulation acquiring private property for public purpose and law deciding the compensation for such acquisition. Suppose some, they used to acquire some land from the private people, from the people who are not, they used to acquire some land. They have to give it. Right. Private property आपके, that's not a fundamental right. तो कंपनसेशन तो एनफ होना चाहिए ना, कि अपनी जमीन वो आपको दे रहा है, तो देयर शुड बी एनफ कंपटीशन, गुड compensation should be there. Right. Which type of compensation? What type of percentage should be given? It is a matter should be discussed. It is a matter which should be discussed. Private property and was some instances of the conflict between legislature and the judiciary. और यहीं से legislature judiciary की conflict शुरू होता है. In 1973, the Supreme Court gave a decision that has become very important in regulating the relation between the Parliament and the judiciary. Since then, this case is famous as the Keshav Nanda Bharti case. Keshav Nanda Bharti case. Right, इसको केशव नंदा भारती केस को कहा जाता है। और इस केस में क्या हुआ था, इस क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इस केशव नंदा भारती केस में व्हाट हैपेंड इन केशव नंदा भारती केस. In this case, the court ruled that there is a basic structure of the constitution and nobody, not even the parliament, through the amendment, can violate the basic structure. Yeah. Here I am giving me basic structure. Here it is, violate the basic structure. Right. So Parliament be whatever the fundamental rights have been given to you by the law, by the court, or by the basically Parliament, or by the country to a person.
As a citizen, you have got some fundamental right. In every country, fundamental right is there, except the dictator countries and all. Baki all type of, democratic country or any other kind, socialist countries, they have got lot of fundamental right. So they cannot violate. Parliament even cannot violate the basic structure of the democracy. The court did two more things. First, it said the right to property, the disputed issue, was not a part of the basic structure, right? And therefore could be suitably abridged. सबसे पहले कहा गया, पार्लियामेंट ने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है. जब ये बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर नहीं आता है, तो पार्लियामेंट could be that particular your right could be abridged. उसको उसको नजरअंदाज किया जा सकता है, उसके ऊपर कानून लाया जा सकता है. And was not part of basic structure and therefore it could be suitably abridged. ये इसको रोका जा सकता है प्राइवेट प्रॉपर्टी को. Secondly, the court reserved to itself the right to decide whether the various matters are part of the basic structure of the constitution. This case is perhaps the best example how judiciary uses its power to interpret the constitution. So next है कि court asked to reserve to itself the right to decide whether various. Secondly, the court reserved to itself. कोर्ट ने अपने आप को रिजर्व कर लिया टू इटसेल्फ द राइट टू डिसाइड वेदर वेरियस मैटर्स आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. तो जब उसने कहा, कोर्ट को कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो कोर्ट ने अपने आप को रजिस्ट कर लिया कि हम और नहीं बताएंगे कौन ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये आप डिसाइड करो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है. राइट. देन of the constitution, this case is known as the Keshavananda case, and this case is perhaps the best example how judiciary uses the power to interpret the constitution, or how constitution के अंदर कैसे interpret करती है judiciary, तो उसका best example. ठीक है. So this ruling has changed this nature of conflict between the legislature and the judiciary. As we studied earlier, the right to property was taken away from the list of fundamental rights in 1979. And this also helped in changing the nature of the relationship between these two organs of the government. So, 1979 में आपका जो फंडामेंटल राइट था 1979 से पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपसे विड्रॉ कर लिया गया. Now, right to property is a simple right, not it's your fundamental right. ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है. कब खत्म किया गया ये फंडामेंटल राइट? 1979 में. इससे पहले कुड बी पॉसिबल, बट अब ये नहीं आपका फंडामेंटल राइट. और इसने नेचर, जुडिशरी के नेचर को और पार्लियामेंट के नेचर को बहुत हद तक चेंज कर दिया, उनके कामकाज को बहुत चेंज कर दिया. अब पार्लियामेंट भी इंटरफेयर नहीं करती है जुडिशरी के मामले में, और जुडिशरी भी पार्लियामेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है at the present, because their borders are very much it's a restricted border. आप एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते. It's clear what you have got the right, judiciary is having the right, what the parliament has having the right. When your rights are clear, when your duties are clear, you will not abridge your duties and rights. अब आप अपनी ड्यूटीज को, अपनी राइट्स को abridge नहीं कर सकते हो. So ये this was the last leg, and conclusion is conclusion और ये chapter 143, पेज नंबर 143 और पेज नंबर 144 आप इसे पढ़ोगे. फिर भी मैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंक्लूजन पढ़ देता हूं, so that the conclusion should be absolutely clear. Give me some time. Yeah, this is the conclusion.
we have studied the role of judiciary. हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने जुडिशरी के रोल को पढ़ा. किसके अंदर? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर. इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री. हमने इसमें डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर जुडिशरी के रोल को पढ़ा. कंक्लूजन कर रहा हूँ, आपने बस एक पेज को अच्छे से पढ़ना. ये 2 पेजेस 142 143, और you have got the holiday also, so you can read thoroughly. So, in spite of the tension that that arose from the time to time between judiciary and the executive and legislature, the prestige of judiciary has increased considerably. जो जुडिशरी है ना, इसका रोल काफी वास्ट हो गया आज, और इसकी प्रेस्टीज भी काफी बढ़ी, इसका सम्मान भी बढ़ा लोगों के मन में. देखिए, लोग अपनी जुडिशरी को तभी रिस्पेक्ट देंगे then when you believe. Why you respect your parents? Because you believe in your parents. That whatever they are doing for your benefit. When you respect the judiciary, when you respect the parliament, we know that these parliament and judiciary is meant for us. Whatever they are doing it, they are doing for us. तो जुडिशरी का अपना एक रोल जो है काफी बढ़ गया है, और इसकी जुडिशरी हैज इंक्रीज कंसिडरेबली इट्स प्रेस्टीज. इसकी प्रेस्टीज भी बढ़ा है. At the same time, there are many more expectation from the judiciary. लोग बहुत जुडिशरी से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. एक आम आदमी भी जुडिशरी से बहुत एक्सपेक्ट करता है. Right? So that is conclusion, which we have done it. Now this chapter is also finished, and I will give you homework of this chapter, and tomorrow we will again the legislature. Wait, give me few minutes time. We will go for the executive. We will go for the executive. Executive के बारे में पढ़ेंगे या कुछ और चैप्टर करेंगे, whatever it is. Till then, take care. Do your homework. Read thoroughly whatever the part is there. Okay? Thank you and have a nice time.